बोलिए, वो गूंगी रानी कौन है? नंदिनी। Hello and welcome to Do I Like It, a Quint production where we review anything and everything under the sun. मेरा नाम है प्रतीक लिद्धू and in this episode I'll tell you, do I like Ponniyin Selvan 2? Okay, so before I start talking about Mani Ratnam's PS2, I want to tell you a bit about my life. मेरा ना movies के part 2s से इतना ना अच्छा रिश्ता रहा नहीं है in the past. So, I mean, Baahubali 1 over 2, Gangs of Wasseypur 1 over 2 type situation. I have always liked the first film over the second film, and by the way, I'm only talking about films that start from the same place where the first one ends. मतलब Dhoom 2 और Dark Knight वगैरह नहीं, which are like technically sequels. उसमें हो सकता है, but all of these films where the first film starts a story and then the second film concludes it, उसमें मेरे को usually पहली picture ज़्यादा अच्छी लगती है because oftentimes I find that the conclusion isn't as satisfying as the premise जो set हुआ था. But I would say that in this film वो trend थोड़ा सा change हुआ है because right off the bat comparing PS2 with the first film Ponniyin Selvan 1, I like it much better than the first one. So ठीक है, PS2 के बारे में थोड़ी बात करते हैं. एक तो सुबह ही मेरा ना दिन थोड़ा सा ruin सा हो गया है आज, and I was thinking that I'm gonna hate the film because of that, because I'll tell you what happened. सुबह मेरा एक 9:20 का शो था और उसके बाद एक 10 बजे का शो था, and both the theaters last moment पे they cancelled my movie ticket because not enough people had bought the tickets. फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो ख़त्म ही हो गया ना फिर इसका मतलब. आई सॉ एक्चुअली आई वांटेड टू वॉच द फर्स्ट डे फर्स्ट शो in one theater, but I actually saw the first day third show in another theater. So yeah, anyway, काफ़ी मैं frustrated था, 2 theaters में लड़ाई करके आया था, 1 घंटा ड्राइव करी, and I finally watched Ponniyin Selvan 2, and now I'll tell you my thoughts, ठीक है. एंड बाय द वे देर आर स्पॉयलर्स फॉर PS1 तो अगर वो नहीं देखी तो प्लीज़ प्राइम वीडियो पे जाके देख लो. एंड ऑल्सो इन जनरल आई वुड से फॉर दिस पर्टिकुलर फिल्म, बिकॉज यूजुअली आई एम समबडी हु लाइक्स सबटाइटल्स ओवर डबिंग, बट आई थिंक बोथ फॉर PS1 एंड PS2 अगर तुम पहली बार मूवी देख रहे हो तो इसको अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही देखना, because I mean this was the experience for me that some names were so complicated and some of the names of the places were, you know, so unfamiliar to me. Okay, so PS1 के एंड में पांड्या किलर्स ने अरुण मोड़ी AKA PS1 और वंद्या देवन को कैप्चर किया हुआ है ना, और अचानक से एक तूफान आता है एंड एवरीबडी ड्राउन्स, बट एन ओल्ड वुमन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक नंदिनी, द कैरेक्टर दैट्स प्लेड बाय ऐश्वर्या राय, नंदिनी सेव्स अरुण मोड़ी एंड द एंड. यहीं पे पिक्चर खत्म हो जाती है कि एक बूढ़ी सी औरत आती है जिसको पहले तुमने मूवी में कहीं नहीं देखा, वो आती है एंड शी इज़ नंदिनी, एंड इफ़ यू सीन PS1 यू नो how XYZ beep 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 Nandini is. So इस फिल्म का सबसे बड़ा सवाल going into this film was who saves Arun Modi, right? And of course I haven't read the source material, so that was something I was so looking forward to. I was very like काफ़ी मेरे को मज़ा आया वो pay off देख के. And in general, I think one of the best things I like about PS2 is that even though it is an epic film, quote unquote, बहुत, you know, production design, high budget, cameras, सब कुछ शोशाबाजी सारी है, it's like epic with a capital E, it's not very grand. I mean, it's very usual. There is conflict, but that conflict is very humane and, you know, रोज़मर्रा की चीज़ों जैसी होती है. Because usually in these epic high-scale films like Baahubali and all, you don't care about the characters itna. At least I don't care about the characters at all. I go to these films for the spectacle, right? But यहाँ पे तो there is no spectacle. In fact, the spectacle वाले war scenes etc. are the worst parts of the film. मतलब उस समय पे I was like, dude, क्या? Why are you trying to be a cheap knockoff version of a Rajamouli meets Sanjay Leela Bhansali? It was the scenes where two people are just talking. That's where the conflict comes from. And it feels like something is at stake. भाई एक पॉइंट पे तो डर के मारे मतलब एकदम हालत ख़राब हो गई थी कि
ओके अब क्या होगा, ये ऐसे कैसे बोल रहा है, इसने इसको ये बोल दिया तो अब तो ये ऐसा कर देगा वैसा कर देगा. What elevated these normal conversations were the amazing Hindi dialogues by दिव्य प्रकाश दुबे. पहली वाली मुझे लग रहा था कि हिंदी में इतनी होल्ड अप नहीं कर रही थी जितनी तमिल में कर रही थी, बट ये वाली हिंदी में भी मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही. सो आई थिंक डेफिनेटली वन प्रॉप शुड बी गिवन टू दिव्य प्रकाश दुबे फॉर द हिंदी डायलॉग. बहुत अच्छे डायलॉग्स थे. एक बहुत मेरे को अच्छा डायलॉग याद आ रहा है कि राजा, मतलब आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड्स बट इट एसेंशियली मीन्स कि राजा के असत्य को ही राजनीति कहते हैं. So that's like a very profound commentary on even, I mean, our current political times, right? So I think the Hindi dialogues, music by Rahman, amazing music, and also the background score. And I think some of the most innovative cinematography by Ravi Varman. I don't think there was a single shot reverse shot in a film. मतलब for people who don't know cinematography, shot reverse shot is basically तुमने एक बंदे का चेहरा देखा, उसने कुछ डायलॉग बोला, उसके रिप्लाई में किसी ने बोला तो उसका शॉट, फिर वापस पहले बंदे का शॉट, और ऐसे में पूरी कॉन्वर्जेशन निकाल देते हैं लोग, राइट? बट आई डोंट थिंक देयर वाज अ सिंगल सीन लाइक दैट. All the conversations had these intense close-up or these disorienting Dutch angles that just engross you in. मतलब विजुअली देखने से तुम्हें लगता है कि यार इतना टेढ़ा, जैसे राम गोपाल वर्मा के एंगल्स पता है तुम्हें, वो बट a bit controlled. So I think these three departments, the dialogue, the music, the cinematography, and also the production design by Totta Tarani, I think all of these things just elevated these very normal seeming things. Because usually in epic films में दो action scenes के बीच में थोड़ी सी नाम भर की स्टोरी होती है, एक दो forced dialogues etc. होते हैं. बट यहाँ एकदम उल्टा है यार. Between two amazing long drawn conversation एंड ऐसा षड्यंत्र वाली बैक स्टैबिंग हो रही है, ये चल रहा है. देर इज़ थोड़ा ऐसा क्लंकी चॉपीली एडिटेड एक्शन सीन विद एन एलिफेंट और अ घोड़ा वोड़ा, एंड दैट्स सो कूल. फाइनली देर इज़ एन एपिक मूवी वेयर यू केयर अबाउट द पीपल इन इट एंड यू आर नॉट जस्ट देयर फॉर द स्पेक्टिकल. Talking about the performances in the film, I think there were some really nice performances because all of these actors, Vikram, Karthi, Parthiban, जो मेरे को मतलब सुड़ल के बाद तो I have become a fan, Prakash Raj, all of these guys, मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. But one person जिसकी performance से मैं, I mean, I don't know if I'm impressed or I am hypnotized, but let us talk about Aishwarya Rai, dude, as Nandini. मतलब यूजुअली हम बोलते हैं कि एक्ट्रेसेस को मूवीज़ में सिर्फ उनके लुक्स की वजह से लिया जाता है, और ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए. दे शुड बी गिवन सब्सटेंस वाले रोल्स एंड ऑल ऑफ दैट. बट दैट आर्ग्यूमेंट फेल्स हियर बिकॉज ऐश्वर्या राय का रोल इन दिस फिल्म इज़ ऑफ अ seductress, is of a goddess. She's a goddess in this film. And I won't mind if she was cast in this film only for her looks because matlab you just look into her eyes and you're sucked in, and that is her character. So it's so good that tumne Aishwarya Rai, who's anyway a good actor, you've used her beauty, जैसे कहते हैं ना, मतलब नॉट जस्ट लुक्स या नॉट जस्ट ऐसा कोट हॉटनेस और एनीथिंग लाइक दैट, नॉट आई कैंडी. you've used her proper beauty, her eyes, her face, her expressions, the way light shines off her face. काफ़ी poetic हो गया, but yeah, the way light shines off her face, you've used that to draw a characteristic from that, and that's so good, man. That's so good. So I think Aishwarya Rai was the highlight of this film for me, and it's a great job of casting and of just using that character as the driving force of this film, essentially. Another thing I really liked about this film was that things were not just what they seemed like. Matlab, it wasn't like love between two people was this eternal और मैं तुम्हारे पीछे जान दे दूंगा और प्यार में हैं हम दोनों, वैसा वाला love नहीं था. You know, that Baahubali and Devsena wala love. And by the way, you'll hear a lot of comparisons to Baahubali with this film, and that's only because I personally think that Baahubali is the perfectly done historic epic. But I think Ponniyin Selvan is how Mani Ratnam would make a historic epic. So it might not be the best way to do it, but it's kind of his own way to do it. So इसलिए मैं Baahubali से compare कर रहा हूँ, because Baahubali for me is the standard of, at least in India, of how you do a historic epic, right? So वैसे
in this film, when two people are having like a meet cute और वो लोग एक दूसरे को से ऐसे बात कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, you can't be 100% sure कि ये दोनों प्यार में हैं. There is like very nuanced levels of relationships that are being explored. There's attraction, there is just friendship, there is one-sided attraction for somebody, there is attraction so that कोई कॉमनर वॉन्ट्स टू बिकम अ नोबल पर्सन और उसको राजमहल और ये सब चाहिए, सो वो देख उसकी तरफ प्यार से रहा है बट अंदर उसके कुछ और है. देर इज़ इंसेस्चुअस रिलेशनशिप्स. सो देर आर काफ़ी शेड्स ऑफ a lot of dynamics of love, and same goes for all other kinds of relationships, right? There is this one scene between Trisha and Karthi where Karthi is blindfolded, and I would say that is one of the most sensual and playful scenes I've seen in a while, and I think only Mani Ratnam and AR Rahman could have pulled off something like that, because there is humor in that, and there is that thoda sa chhedkhani hai. There is the woman just expressing herself, and she's also, I don't want to give away a lot, but yeah, that scene is really nice. And they're not even a couple, they have such a very weird, they meet only once in the first film, they meet only once here, but still there is such a beautiful scene between them. That's the kind of detailing that I'm talking about, कि तुम्हारे मेन कपल में तो है ही अच्छे अच्छे सीन्स और डायलॉग्स वगैरह, बट इवन दिस छोटू सा रिलेशनशिप की थोड़ी सी डेप्थ में जाया गया है. बट इस फिल्म में भी इंटरवल के बाद there is a bit of a slump. I mean, that sort of got me thinking, in general in Indian cinema, should we get rid of the interval? Because so many films have to break narrative and just build that hype again. Or some people do it. And of course, people like Rajamouli, people like, even for Pathan, what they did with the Salman cameo and all of that, those guys did the interval block so well. I even remember Brahmastra ka interval block was so brilliantly done with revealing Amitabh Bachchan and all of that. But I honestly don't think that आज की डेट में जो interval point है वो एक कमर्शियल पॉपकॉर्न बेचने की एक्सरसाइज से ज़्यादा कुछ रह गया. एक टाइम पे समझ में आता था कि यार 3.5 घंटे की पिक्चरें होती थी तो तुम्हें इंटरवल चाहिए ही चाहिए था. बट आज when even the मूवी का लेंथ थोड़ी कम हो गई है, I think we should start this conversation of getting rid of the interval so that in general people start making more concise films. And I think if you talk to directors, they would really be in favor of that. I remember Anurag Kashyap had talked about his film Almost Pyar with DJ Mohabbat having no interval in the start, and that's why when it came on Netflix he was like, okay, this is how you're supposed to watch this film without an interval. In this film specifically, interval tak, I honestly thought it is a perfect film जब तक interval हुआ, because everything was going right. Interval के बाद though, the film had like a थोड़ा dull moment for around 30-45 minutes, and there were a lot of things happening without any structural coherence or direction or anything. It's almost like scene में screen पे चीज़ें हो रही थी और मेरे दिमाग में आ रहा था, अरे कदम्बुर में करिगालन है, तंजौर में अरुण मोड़ी है, वंद्या देवन मैसेज पहुंचा रहा है, नंदिनी पांड्यास के पास है, तो ये ऐसा. And like when you're hearing this, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना. That's almost exactly how I was feeling, because there were 5 subplots going and it's like किसी एक पे भी ध्यान इतना अच्छे से दे नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम, एंड वो थोड़ा खिचड़ी सी बन गई थी. बट या आफ्टर दिस थोड़ा ठीक ठाक एंडिंग होती है, एंड हाँ इट फाइंड्स इट्स वे आई थिंक. बट ओवरऑल आई थिंक वन थिंग दैट दिस फिल्म गेट्स राइट इज़ द होल अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ इट. मतलब इन जनरल इस फिल्म में कुछ पता नहीं है कि कौन जीतेगा. You get what I'm saying? Like again, in the Baahubali example, we all know that कुछ भी हो जाए एंड में बाहुबली ही जीतेगा. बट यहाँ पे, एंड स्पेशली फॉर मी बिकॉज आई एम क्लूलेस अबाउट द सोर्स मटीरियल, आई डोंट नो कि हीरो कौन है और विलन कौन है. मतलब इवन दो द फिल्म इज कॉल्ड पोनियन सेल्वन, इज पोनियन सेल्वन और अरुण मोड़ी, इज ही द एक्चुअल हीरो? तो इवन एंड तक आई वॉज लाइक, यार जिसको मैं अच्छा समझ रहा था वो कहीं ऐसा बैकस्टैप तो नहीं मारेगा. Which I think is such a great thing about a film, because on the surface it seems like a हाथी घोड़े वाली तलवारबाजी वाली film, but just like any Mani Ratnam film, it's so individualistic, it is so political, it is so personal, it comments on आज के interpersonal and societal dynamics. आदमी आज भी एक खूबसूरत लड़की को देख के ऐसा लट्टू हो जा रहा है. So the whole conflict isn't grand at all, it's very
वेरी ऐसा अपनी बात कर रहा है ऐसा, बिकॉज इट इज़ ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे, राइट? एंड चोलास के टाइम से आज तक इंसानों की बेसिक फितरत तो सेम ही है ना, सिमिलर सी है. सो इन द एंड, डू आई लाइक पोनियन सेल्वन 2? I think yes. I really like it. It was a great thing seeing Mani Ratnam back in his full glory, because beach mein he had thoda, off time with films like Katravali Day, and beach mein I wasn't the biggest fan of that part of Mani Ratnam, but यहाँ पे still थोड़ा unabashedness मेरे को काफ़ी अच्छी लगी. I would just like to say that Ponniyin Selvan 2 is a grand film without scale or spectacle, as ironic as it may sound. Everybody in the film has played to their strengths, and I think that effort needs to be rewarded, है ना? तो काफ़ी अच्छी मूवी है यार, जाके देखो प्लीज़. हिंदी में देखना है, हिंदी इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, या जो भी तुम्हारी नेटिव लैंग्वेज है उसमें ही देखना, बिकॉज सबटाइटल्स पढ़ने में लग गए तो फिर पिक्चर थोड़ी मिस हो जाएगी. This was Prateek Lidhu. This was our review of Ponniyin Selvan 2, and I'll see you in the next one. Do I Like It is a Quint original podcast executive produced by Shelly Walia and Ritu Kapoor. This episode was hosted and produced by Prateek Lidhu and edited by Anjali Palod. The episode contains audio from the film Ponniyin Selvan 2, and the theme music is from BMG Production Music. You were listening to the Quint's podcast.